Okay, let's start the lecture again. So we're discussing the open sets of R, the topological, the usual topology on R actually. Yeah, we have taken this X to be R, और फिर हमने टाउ जो लिया है टाउ, it's O such that O is open in R, such that this O is open in R. Okay, this is your tau. Then this tau is a topology on R. Then this tau is a topology on R. So therefore these open sets they are actually generated by the usual metric on R. Okay, that you know, and you also know that every metric space is topological space actually. So this tau is a topology on R. Then therefore this R with this tau is a topological space. Is a topological space. Is a topological space. But this tau is not a summary, that we already discussed. It is not a summary. ये summary नहीं है. Hence not a sigma algebra. अगर ये summary नहीं है फिर ये sigma algebra भी नहीं होगी, because every sigma algebra is a summary. तो मैं वही कह रहा था, अगर आपके पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ होगा, देन दैट टाउ नीड नॉट बी सिग्मा अलजेब्रा. तो वही जो आपने एफ लिया था ना, एफ इज ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, वो जो एफ है ना इन जनरल, वो एफ सिग्मा अलजेब्रा नहीं होगा इन जनरल, बट वी कैन जनरेट सिग्मा अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ दैट एफ. So in a similar way we can generate the sigma algebra by this tau, because this tau is also a class of subsets of X. So let's define now it. Let X tau be a topological space. Be a topological space. The sigma algebra generated by tau, अगर ये खुद ही सिग्मा अलजेब्रा होगी तो ये, अगर ये टाउ खुद ही सिग्मा अलजेब्रा होगा, देन द सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय टाउ इज टाउ इटसेल्फ, है ना. जैसे सब ग्रुप के केस में ना, सबसेट, अगर ग्रुप का कोई सबसेट होगा, अगर वो खुद ही ग्रुप होगा तो उससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो वही होगा, है ना. या आपने एनालिसिस में किया होगा, अगर कोई सेट क्लोज्ड होगा तो जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग दैट सेट वो वही होगा, है ना. तो वही यहाँ पर भी है, अगर ये खुद ही सिग्मा अलजेब्रा होगी, देन द सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय दिस क्लास इज इटसेल्फ, इट्स द सेम क्लास. ओके, द सिग्मा अलजेब्रा generated by tau is called Borel algebra. Borel. अब इसके जो मेंबर्स होंगे ना, देन द सिग्मा अलजेब्रा, लेट्स राइट दिस एज S, देन द सिग्मा अलजेब्रा S जनरेटेड बाय टाउ इज कॉल्ड द बोरल अलजेब्रा. अब बोरल अलजेब्रा के जो मेंबर्स है, जो इस सिग्मा अलजेब्रा के मेंबर्स है, उन मेंबर्स को हम कहते हैं बोरल सेट्स. The members of S, Borel algebra. Okay, Borel algebra, or you can say sigma algebra.
we can say sigma algebra or we can say sigma algebra generated by topology tau. Okay, this the members of S. What is S? S is a Borel algebra, or we can say a sigma algebra generated by tau, are called Borel sets. इनको हम क्या कहते हैं? Borel sets. They are called Borel sets. Okay. अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर आपके पास अब टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास है, ओके, यू हैव टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, और इस टाउ से आपने सिग्मा अलजेब्रा जनरेट किया एस, आप मुझे बता सकते क्या इस एस में ओपन सेट्स होंगे? टाउ के मेंबर्स जो भी है वो सारे ओपन सेट्स है. ओके, एस इज अ सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय टाउ, इट मींस दैट टाउ इज सबसेट ऑफ एस. आपको ये समझ आ रहा है? The smallest algebra containing tau, that is S here, sigma algebra, the smallest sigma algebra containing tau. तो वही हम ले रहे हैं एक्चुअली, the sigma algebra generated by tau or the smallest sigma algebra containing tau. तो ये जो S है ना, it contains tau. ठीक है ये? ओके, इसका मतलब है कि एस में सारी ओपन सेट्स है, क्योंकि टाउ के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? ओपन सेट्स. टोपोलॉजी के जो मेंबर्स है ना, उनको क्या कहते हैं? वी कॉल देम ओपन सेट्स. सो दैट मींस एस कंटेन्स ओपन सेट्स. इट मींस दैट एवरी Borel सेट्स ओपन सेट, नॉट एवरी ओपन सेट्स Borel सेट. एवरी ओपन सेट इज a Borel set because the members of S are called Borel sets. So every open set is Borel set. What about closed sets? क्या closed sets भी Borel sets है? Closed sets भी Borel sets है? Yes. देखिए, Borel सेट्स किनको कहते हैं? जो कि इस एस के मेंबर्स हो गए, इस एस के जो मेंबर्स है ना, उनको हम कहते हैं Borel सेट्स. अब मुझे बताइए, क्या इस एस में क्लोज्ड सेट है विथ रेस्पेक्ट टू द टोपोलॉजी टाउ? क्योंकि क्लोज्ड सेट्स ऑलवेज डिफाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन टोपोलॉजी. जैसे ओपन सेट्स, जब भी आप ओपन सेट्स की बात कर रहे होगे तो दैट मीन्स यू हैव सर्टेन टोपोलॉजी, उसी के मेंबर्स जो होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं. तो और क्लोज्ड सेट्स कैसे डिफाइन करते हैं? उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि टाउ में जो मेंबर्स होगी, मतलब जो ओपन सेट्स होगी, उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम लेते हैं क्लोज्ड सेट्स. तो आप मुझे बताएं, क्या एस में क्लोज्ड सेट्स है? एस इज सिग्मा अलजेब्रा है ना. एस क्या है? सिग्मा अलजेब्रा. ओके, इट्स क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन. ये क्लोज्ड है अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन. होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इसमें सारे ओपन सेट्स है, उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इसी में होगी. सो दैट मीन्स एवरी क्लोज्ड सेट इज. सो if let's try to prove it. So let f be a closed set. F be a closed set. Then its complement is an open set. So therefore F complement, it belongs to tau because it's an open set. Tau is a class of all open sets, and this is subset of S, the Borel algebra. So which implies F complement. Okay. F complement belongs to S. But this S is a sigma algebra,
it's a Borel algebra, it's sigma algebra first. So F complement, whole complement, belongs to S, because S is a sigma algebra. S is a sigma algebra. S is a sigma algebra. So which implies that this F belongs to S. So thus F is a Borel set. Thus F is a Borel set. So every closed set is a Borel set. Every closed set is a Borel set. अब मुझे बताए कोई सेट ऐसा है जो ओपन भी नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा, बट स्टिल वो जो सेट होगा वो बोरल सेट होगा. कोई सेट ऐसा है आपके पास जो ना क्लोज होगा. जैसे आपने देखा हर कोई ओपन सेट बोरल सेट है, हर कोई क्लोज सेट बोरल सेट है. अब मुझे कोई ऐसा सेट बताइए जो ना क्लोज होगा ना ओपन होगा, बट स्टिल दैट सेट इज अ बोरल सेट. एग्जाम्पल आपको देनी है. स्क्रीन नहीं आ रही है. अब आ रही है स्क्रीन? ओके. तो मैं ऐसी एग्जांपल चाहता हूँ, ऐसे सेट की एग्जांपल जो कि ना क्लोज हो ना ओपन हो, बट स्टिल दैट सेट इज अ बोरल सेट. सो लेट्स टेक दिस. हाँ, यस, हाँ, आप कुछ कह रही थी. And this topology is O such that O is open set. O is open set. Let S be a sigma algebra generated by this term. Okay. तो ये मैंने R के लिए लिया है. मैंने यूजुअल टोपोलॉजी ली. वो इज ओपन विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक, विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल सेंस जो आपके पास है ऑलरेडी. मतलब इट शुड कंटेन ईच इंटीरियर पॉइंट है, जो डेफिनेशन आपके पास है ओपन सेट की एनालिसिस में. सो व्हाट वी डू, लेट्स टेक दिस set. This set 0 and open on 1. What about this set? This set is neither closed nor open, but you can write this as whether intersection or union. I don't know exactly. Let me check it. 0. आपको स्क्रीन आ रही नजर? ओके. इसमें ये मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है बीच में. ओके. सो आई वांट टू एक्सप्रेस दिस एज द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स. एक्चुअली इट्स 0 then let's take this one. 1 minus 1 by n. N runs from 1 to infinity. It's the countable intersection of closed intervals. So each set is closed set actually now. On this side each set is closed set, so that means each set is a Borel set ना. इस साइड में जो भी सेट है आपके पास इंटरसेक्शन में, वो क्या है? वो बोरल सेट है.
So that means these sets 0, 1 minus 1 by n, they all belong to S, because every closure set is a Borel set. Every closure set belongs to this sigma algebra S. Okay, and this S is sigma algebra, therefore its closure under countable intersection. So which implies that this intersection n runs from 1 to infinity. ये जो intersection, it's also in S, but this intersection is equal to this semi-closed interval. So this means that semi-closed interval, it belongs to S. So which means that this semi-closed interval is a Borel set, but this is neither closed nor open, because it contains a point 0 which is not the interior point, and there is a point 1 which is not in this set, but that point 1 is a limit point of the set. So it's not closed. It doesn't contain each of its limit point, as one is its limit point, but one is not in the set, and also each point of this set is not the interior point, because 0 is the point of this set, but this 0 is not its interior point. So this set which semi-closed interval is neither closed nor open, but still it's a Borel set. For this you have to verify this one, this equality actually. Let's try to verify this. 0, 1 is equal to intersection 0, 1 minus 1 by n runs from 1 to infinity. It's open on this side. So let's choose x here first. So which means that this x belongs to 0 to 1 minus 1 by n for all n greater or equal to 1. So which means that 0 less or equal to x less or equal to 1 minus 1 by n, but 1 minus 1 by n is less than 1 for each n. Yeah, 1 minus 1 by n is less than 1. Okay, so that means 0 less or equal to x less than 1, which means that x belongs to this semi-closed interval 0 to 1. Okay. So in this way it's trivial. So this is subset. This intersection is subset. So therefore the intersection 0 to 1 minus 1 by n runs from 1 to infinity. It is subset of this set. Now let's prove its converse. Now let x belongs to 0 to 1. So it's open on this side. So not I must take the union actually. मैंने गलत लिया है, तो इसलिए मैंने पहले आपको कहा कि इसको वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे पहले. So there must be union, not intersection. But again we don't have any problem, because we know that sigma algebra is closed under countable union also. So आप इसको फिर से लिखिए यहाँ पर. This is sorry, मैंने इसको जल्दी में लिख दिया. It's actually union है. So this union. So you need to prove this union actually. It's union. Its union n runs from 1 to infinity. Its union, so it will not create problem. So it means that this is not true for all n now, for some n, okay, because it is in the union. For some n greater or equal to 1. So here it's not this.
So it's in this, which means that 0 less or equal to x lesser. Now this n exists, which is for some n, but for every n actually 1 minus 1 over n is less than 1. So in particular for this n which exists here for this union, so it's less than 1 by n. So this is thing is trivial. Now we go to the next page. So we have this. This is the union here. This is the union here. Okay. Now let's take x here. This implies 0 less or equal to x less than 1. Now we can choose n so large. We can choose n so large such that 1 minus such that x is still less than 1 minus 1 over n. Choose. Actually, here we are applying what we call that Archimedean property is here. We choose n so large such that x still be less than 1 minus. Yes, कोई कुछ पूछ रहा है? तो हम n choose n so large with this property x is less than 1 minus 1 over n. मतलब हम 1 को subtract करेंगे ऐसा number which is very small because n is very large number, so 1 over n is very small number. तो इतना छोटा number हम इसको subtract करेंगे, this strict inequalities will still remain. So that we can do. आपको ये समझ आ रहा है? ये ठीक है. So this means that your 0 is less or equal to, it's always here, less or equal to x, and x is less than 1 minus 1 by n. So what does it mean? It means that x belongs to this interval 0 to 1 minus 1 by n, but it's open on this side. But whenever it's open, so whenever x is here, so it must be also the closed interval because it's an open interval, so it's also a closed interval. So this means that x belongs to 0 to 1 minus 1 by n closed for some n. There is some n with this property, which means that x belongs to the union. N runs from 1 to infinity because it is in at least one closed interval. So therefore this interval, this semi-closed, it is subset of the union. N runs from 1 to infinity. So one simple example is actually there. So thus they are actually equal. They are actually equal. And on the right hand side, it's a sigma. It's a Borel set. But on this left hand side, it's neither open or closed. So this set is a Borel set which is neither open or closed. So can you have any example, any trivial example? तो ये तो हमें कंस्ट्रक्टर पता. So let's take this. Yes.